यस, सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, तो उसके अंदर किस तरह से अलग अलग कंसेप्ट हम डेवलप कर सकते हैं। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो मेन फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो कि प्रेशर का जो मेन फॉर्मूला है, उसको किस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके अलग अलग फॉर्म्स, और उसको यूज करके जो अलग अलग एनर्जीज जो बनते हैं, तो वो भी हमने सब देखे थे। उसके भी एक्सप्रेशंस एक्चुअली हमने देखे थे तभी। और इवन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट हमने देखा था लास्ट टाइम, दैट इज अबाउट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। सो द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम allows us to understand why the gas has different adiabatic constants at different situations, in different situations, or even the different types of gases have different adiabatic constants, and using that we can infer many things about the gas। तो गैस के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं, तो वो हम पता कर सकते हैं। इवन जैसे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना हो, या इवन वर्क डन निकालना हो, डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस हो या आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये अलग अलग सिचुएशंस में गैस के द्वारा किया हुआ जो वर्क डन निकालना, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना, या गैस के द्वारा ऑब्जॉर्ब किया हुआ जो हीट है, तो वो हीट निकाल के दिखाना, ये सब चीजें पॉसिबल होती है सिर्फ तब जब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि गैस का जो एडियाबेटिक कांस्टेंट है, तो वो किस तरह से वेरी होता है और वो कितना होता है कौन से सिचुएशन में। सो चलो फिर अभी आज के लेक्चर में हम और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में क्या डिस्कस किया जा सकता है। we'll just discuss about the mixture of gases, okay, because many times we encounter with the mixture of gases, okay, so let us see. First of all, we'll discuss about the specific heat of the gas। ठीक है, जैसा कि हमने कल भी देखा था कि specific heat of the gas is of two types. One is at constant volume and other is at constant pressure. And always we have seen that Cp is greater than Cv. And also we have seen that the difference between Cp and Cv is going to be capital R. ये भी किसके लिए? मोलर स्पेसिफिक हीट्स के लिए। और ये भी हमने देखा था कि the small Cp minus small Cv is also smaller, and the small r is nothing but capital R upon m naught, where m naught stands for molar mass of the gas, करेक्ट है। सो ये सारी चीजें हमने देखी थी कल। ओके, अब इसमें देखो ये स्पेसिफिक हीट जो है वो डिफाइन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कैपिटल Cv इज एक्चुअली डिफाइंड एज du upon n dt, करेक्ट है। and capital Cp is actually defined as dq upon n dt, where dq is nothing but the amount of heat absorbed at constant pressure, and du is not going to be the amount of heat absorbed at constant volume। and here we have that dq is equal to du plus dw, where dw stands for the work done at constant pressure, okay। and also we have that this cp, small cv is actually defined as du, that is a change in internal energy upon the mass of the gas multiplied by dt, change in temperature, and this small cp will actually be defined as this dq upon mass of the gas multiplied by dt, that is a change in temperature, okay। तो इन सब डेफिनेशंस के साथ हम देख सकते हैं आराम से कि अगर किसी गैस के मिक्सचर का अगर हमको सीवी निकालना है, देखो ठीक से, suppose we have the mixture of two gases and suppose we want to find out the mixture of CV of that mixture, how we are going to get that? तो उसके लिए हमको याद रखना है कि CV is nothing but the amount of energy required to raise the temperature of 1 mole of the gas through 1 degree Celsius, करेक्ट है। तो अभी सोचो अगर हमने मिक्सचर किया, suppose we have n1 moles of first type of gas and n2 moles of second type of gas contained in some two containers like this। तो suppose इसके ये दोनों जो moles है
यहाँ पे N1 इसके अंदर कंटेंट है और N2 moles of the second gas is contained in this second container. And suppose that this first gas is having the specific heat CV1. Okay, at the this is the specific heat of the gas at constant volume for the first gas, and CV2 is going to be the specific heat of the second gas at constant volume for, in this way. And suppose that we form a mixture. अभी अगर सपोज हमने मिक्सचर फॉर्म कर दिया, ये दोनों गैसेस को एक ही कंटेनर के अंदर डाल दिया, अभी इस कंटेनर का, इस गैस का, इस मिक्सचर का स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो उसके लिए हम कंसेप्ट वही यूज करेंगे. सिंपल कंसेप्ट है कि सिंपली हमको ये क्या करना है यहाँ पे कि व्हेन CV1 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द फर्स्ट गैस, राइट, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज CV1 मस्ट बी इक्वल टू, तो CV1 must be actually equal to du1 upon n1 into dt, करेक्ट है. तो ये हमको मिलता है, ठीक है. What does it mean CV2 is the specific heat of at constant volume of the second gas. तो सेकेंड गैस का जो स्पेसिफिक हीट है तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे du2 upon n2 into dt in this way. तो इसका मतलब एक डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस गैस को जितना हीट लगेगा, तो ये फर्स्ट वाले गैस को कितना हीट लगेगा, तो हम बोल सकते हैं du1 is equal to n1 CV1 into dt, इतना हीट लगेगा और जरूर, और उतने अमाउंट से दूसरे गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको कितना हीट लगेगा, तो उसको हम लिख सकते हैं du2 which is actually going to be n2 into CV2 into dt, करेक्ट है, ठीक है. बट अभी जब यहाँ पे ये मिक्सचर है, तो इस मिक्सचर के अंदर जब दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है ऑलरेडी, तो उस केस में इस गैस को जितना भी हीट लगा होगा du1 सपोज, और इस गैस को जितना भी हीट लगा होगा एक dt इतने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो इस मिक्सचर को कितना हीट लगेगा, ऑब्वियसली du1 प्लस du2 इतना हीट रिक्वायर्ड होगा इस मिक्सचर का टेम्परेचर dt से बढ़ाने के लिए. और इसलिए the total amount of heat required by this gas mixture, that is du, can be written to be equal to du1 plus du2. So here we have that du is equal to du1 plus du2, and now if we just replace these values of du1 and du2 here, then we get this value of du as n1 into CV1 into dt plus here it is going to be n2 into CV2 into dt, correct है. Okay, now we'll see what is the specific heat of this mixture here. अभी इस मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन करेंगे, so the specific heat of the mixture will be defined as CV, which is going to be equal to the amount of heat required to raise the temperature of this gas per unit mole. अभी लेकिन इसके अंदर कितने मोल्स हैं, जरूर n1 plus n2 इतने मोल्स उसके अंदर है, क्योंकि ये जो गैस है ये भी इसके अंदर हमने डाल दिया और ये भी इसके अंदर डाल दिया, तो इसकी वजह से ये मिक्सचर तैयार हो गया. तो मिक्सचर के अंदर जरूर n1 plus n2 इतने टोटल नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, जिससे हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा. सो दिस विल बी n1 plus n2 here in the denominator, and that is to be multiplied with dt because we want to increase the temperature of this mixture also by the same amount, that is dt, that is we have increased it for these two gases here. So here in this case we get this फाइनली. तो अब यहाँ पे अगर हमने ये du का जो वैल्यू है पूरा, ये अगर हमने इधर रख दिया, ये du के बदले अगर रख दिया, तो हमको मिलेगा CV इज इक्वल टू, तो du के बदले आ जाएगा n1 into CV1 into dt. अच्छा, कैन वी टेक दिस dt कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, सो वी कैन गेट दिस n1 CV1 प्लस n2 CV2 and that is multiplied with dt, and that is to be divided by this n1 plus n2 into dt, correct है. So that is dt just gets cancelled, and what we are left with is simply CV is equal to n1 into CV1 plus n2 into CV2 divided by n1 plus n2, which is nothing but the formula for specific heat of a mixture of two gases. Remember, now whatever we have done with this CV here, we can do the same thing for CP also. Let us check. CP के लिए क्या कर सकते हैं, देखो, if suppose we have two mixtures, two gases,
two samples of gases. One is suppose of moles, N1 moles, and it's having the specific heat Cp1 at constant pressure. And suppose we have the second sample, which is of number of moles N2, and it's having the sample or specific heat at constant pressure as Cp2 here. Then we can say that if suppose both of these samples are just mixed together, then this sample will contain N1 plus N2 number of moles. This is one thing. And the second thing is that it will require an energy. अभी अगर सपोज इसको अगर dq1 इतना एनर्जी लगता होगा, इसको अगर dq2 इतना एनर्जी लगता होगा, तो इस मिक्सचर को कितना एनर्जी लगेगा? जरूर उसको हम लिख सकते हैं dq which is equal to dq1 plus dq2. And if we use this here, then we get this dq is equal to dq1 plus dq2. But as we know that dq1 can be written to be equal to n1 into cp1 into dt, correct? According to the definition of cp itself. And this dq2 here can be written to be equal to n2 into cp2 in this time into dt. And this is going to be the value of dq here actually. And according to the definition of cp, what is the specific heat of the mixture of gases? अभी मिक्सचर का जो स्पेसिफिक हीट है वो रहेगा the total amount of energy required per unit number of moles per unit degree rising temperature, which can be solved further by putting this value of dq here. ये जो dq का पूरा वैल्यू है कि नहीं, तो वहां पे अगर रख देंगे उसके बदले तो हमको मिलेगा n1 cp1. Okay, again we can take this dt common and get this as n2 cp2, and that is multiplied with dt, which is to be divided by n1 plus n2 into dt, so that this dt gets cancelled, and what we are left with finally is the specific heat of at constant pressure for the mixture of two gases is going to be n1 cp1 plus n2 cp2 divided by n1 plus n2, which is going to be the final formula for this. Okay, now we'll discuss about the adiabatic constant also. If suppose we want to find out the adiabatic constant of mixture of two gases, suppose for example we have first sample of n1 moles and whose adiabatic constant is suppose gamma 1, okay, and the second sample of gas is having the number of moles n2 and it having the adiabatic constant gamma 2 suppose. And suppose now we have mixed both of these samples and formed a mixture. तो एक मिक्सचर हमने यहाँ पे फॉर्म किया जिसके अंदर ऑब्वियसली n1 plus n2 इतने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, नो डाउट. बट व्हाट इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ दिस सैंपल, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, अब देखो गामा 1 मतलब क्या होता है? गामा 1 इज गोइंग टू बी cp1 upon cv1, राइट? एंड गामा 2 इज एक्चुअली गोइंग टू बी cp2 upon cv2, करेक्ट है? Yes, and this gamma here is actually going to be Cp upon Cv. So Cp1 और Cp2 यूज करके हम Cp निकाल सकते हैं, नो डाउट. ओके, एंड Cv1 और Cv2 को यूज करके Cv निकाल सकते हैं, मिक्सचर का Cv निकाल सकते हैं, जैसा अभी जो फॉर्मूला देखा उसको यूज करके. एंड देन अल्टीमेटली वी कैन फाइंड आउट द gamma just by using Cp and Cv. But there is another method to find out gamma using directly gamma 1 and gamma 2. See here, तो उसके लिए हमको ये यूज करना होगा कि हमको पता है कि Cv मतलब मिक्सचर का जो स्पेसिफिक हेट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो होता है n1 into cv1 plus n2 into cv2, that is to be divided by n1 plus n2, करेक्ट है? ये फॉर्मूला है हमारे पास Cv ऑफ मिक्सचर के लिए, नो डाउट. अभी और एक फॉर्मूला हमारे पास है जो हमने कल हमने ये प्रूव किया था कि जब Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है तो इसको यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1. डू यू रिमेम्बर हाउ दिस कम्स आउट हियर? ये कैसे प्रूव किया जा सकता है पता है सबको? क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R, बट Cp अपॉन Cv इज gamma. So we can say that this Cp is going to be actually gamma times of Cv, right?
minus Cv as it is, and that is going to be equal to R. So if we take this Cv common, then we get this gamma minus 1 left inside, which is equal to R. And if now we get this gamma minus 1 in the denominator, then we can get this proved here. That is Cv is equal to R upon gamma minus 1. Okay, if we use this formula here, तो यहाँ पे Cv के बदले क्या बन जाएगा? देखो Cv के बदले हम लिख सकते हैं R अपॉन gamma minus 1. अभी जबकि ये Cv मिक्सचर का है, तो गैमा भी हमको मिक्सचर का ही यूज करना पड़ेगा, जो कि जिसको हमने गैमा ही डिनोट किया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे इस तरफ N1 इंटू Cv1 के बदले क्या रखना पड़ेगा हमको? देखो Cv1 के बदले हमको मिलेगा, जबकि अभी Cv1 is the specific net constant volume of the first sample. So we will have to use this formula and gamma 1 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमको. इधर अगर Cv1 चाहिए तो इधर gamma 1 यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम डाल देंगे उसको यहाँ पे, तो हमको मिलेगा R अपॉन, तो R अपॉन gamma 1 माइनस 1. करेक्ट है, चलो ठीक है, ये हमको मिल गया. प्लस अभी N2 मल्टीप्लाइड बाय Cv2. व्हाट इज दिस Cv2? It is a specific heat at constant volume of the second sample. If you want to find out the value of Cv2 here, then we will have to use this gamma 2 here in this formula, so that we can get this as R again upon gamma 2 minus 1. Okay, and now if we just N2 here, then we can get it as, so R upon gamma minus 1, which is equal to, अब इसमें से R हम कॉमन निकाल सकते हैं आराम से. तो चलो ठीक है, अगर R हमने कॉमन निकाला तो ये N1 यहाँ पे आएगा, तो बनेगा N1 अपॉन gamma 1 minus 1 plus here it will be R is already common, and here it will be N2 upon gamma 2 minus 1, and that is to be divided by N1 plus N2 as a final. And now if we just cancel out this R from both sides, and if we take this N1 plus N2 in the numerator in that side, then we get this as, तो ये फॉर्मूला हमको मिलेगा N1 plus N2 upon gamma minus 1, which is going to be equal to N1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 upon gamma 2 minus 1. This is a very important formula for finding gamma from the knowledge of gamma 1 and gamma 2. Okay, so if we know these adiabatic constants of two components of a mixture, then we can find out the adiabatic constant of that mixture as immediately using this shortcut, or using this formula. Okay, so remember this formula correctly. It's very easy to remember. See, N1 plus N2 upon gamma minus 1. What is gamma here? It is the adiabatic constant of the mixture, and that is equal to N1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 upon gamma 2 minus 1. So what is N1 and N2 here? The number of moles of components. And what is this gamma 1 and gamma 2 here? It is the adiabatic constants of the components of that mixture. Okay, yes. Then again, sometimes we are asked to find out the temperature of the mixture. If suppose two similar type of gases are mixed together, okay, at two different temperatures. Suppose that the first gas is at temperature T1, and suppose N1 moles of that gas is mixed with another sample which contains N2 moles at temperature T2, and suppose both of these gases are of same type. Okay, ये दोनों जो है वो सेम टाइप के हैं. सेम टाइप मतलब either monoatomic, either diatomic, vibrating, or diatomic non vibrating, or whatever may be. ट्राइटोमिक भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन उनका जो Cv का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए. तो इफ वी जस्ट फ्यूज दीज टू गैसेस, मतलब इन दोनों गैसेस को अगर हम सपोज कंबाइन करते हैं, इफ वी फॉर्म द मिक्सचर हियर, सो इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा, और वो भी हम वॉल्यूम को भी हम कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम इज आल्सो केप्ट कांस्टेंट. ओके, तो इस केस में हम देख समझ सकते हैं यहाँ पे कि the total energy of this gas U1 we can say, and
just wait. Okay, so we can see the total energy of this first type of gas is supposed to be U1. Okay, and the total energy of second type of this gas here will be supposed to be U2. Then according to the energy conservation, what we can say that the total energy of mixture must be actually equal to U1 plus U2. And actually already we know that the total energy of any gas is always given by n CVDT, करेक्ट है? तो यहाँ पे आ जाएगा U1 इक्वल टू, तो U1 के बदले क्या आएगा? देखो U1 कैन बी रिटन टू इक्वल टू N1 CV into DT और T ओनली, क्योंकि DU है ना, DU1 के लिए हम DT यूज करते हैं, तो U1 के लिए T यूज करेंगे, तो यहाँ पे T1 आ जाएगा, नो डाउट. And in the same way, U2 can be written to be equal to N2 CV into T2. Okay, and here U actually the total amount of energy can be obtained here in this way. So U can be written to be equal to N1 CV T1 plus N2 C2 sorry CV into T2 here. But as we can expect this U to be equal to, अब यहाँ पे कितने मोल्स है? N1 plus N2 इतने नंबर ऑफ मोल्स है, एंड टेम्परेचर ऑफ ये डिफरेंट टेम्परेचर है, तो अगर सपोज T1 इज ग्रेटर देन T2, सपोज T1 बड़ा है T2 से, तो होगा क्या कि द दिस यू फर्स्ट टाइप ऑफ गैस विल गिव सम हीट टू द सेकंड टाइप ऑफ गैस, and because of that this temperature will just get equalized, and that constant temperature suppose it becomes T here, then we can expect U to be equal to N1 plus N2 into CV, which is same. Okay, तो दोनों सेम टाइप के गैस होने की वजह से यहाँ पे इधर भी CV आ जाएगा, और that is multiplied by T here. So if we just replace it here, then we get this as simply N1 plus N2 into CV into T, which is going to be equal to N1 CV T1 plus N2 CV T2. So that if we just cancel out this CV from all these three terms, अगर इस पूरे को अगर हमने CV से डिवाइड कर दिया, this divided by CV, divided by CV and divided by CV here, so CV will get cancelled here, here also and here also, so that, and if we take this N1 plus N2 in the denominator in the other side, then we can get simply as T is equal to, so T will be equal to N1 into T1 plus N2 into T2 upon N1 plus N2. This is going to be the formula for finding the temperature of a mixture of two gases which are at different temperatures before combination, and they attain a constant temperature after combination. तो मिक्सचर फॉर्म होने के बाद जो उस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हमको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा. लेकिन ये कभी यूज करना होगा अगर वो दोनों गैसेस सेम टाइप के हैं तो, no doubt, only when these two gases are of same type, then only we have to use this formula here. Otherwise, अगर वैसे नहीं है तो उस केस में हमको क्या करना होगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे CV1 और CV2 ये बातें यूज करनी होगी. ठीक है, देखो यहाँ पे suppose we have the mixture, but in that mixture the first gas is of N1 moles, and suppose its specific heat at constant volume is going to be CV1, and suppose that second sample is of N2 moles, and yes Abhishek, if we just form this mixture, then this mixture will have some another specific heat at constant volume, but one thing can be clear here, that whatever amount of heat is lost by this first gas, okay, we can call it as DU1, will be same as the amount of heat lost by this second type of gas, which is DU2 here. So DU1 and DU2 will be same. And what is DU1 here? DU1 can be supposed to be, अच्छा अभी इसमें अगर इसका टेम्परेचर अगर मान लेते हैं T1 है, ओके, इसका टेम्परेचर मानते हैं T2 है, और इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो अगर हम मान लेते हैं T है सपोज, एंड ऑब्वियसली मिक्सचर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे,
तो N1 प्लस N2 इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो तो क्लियर है बिल्कुल. So in this case, we can see clearly that du1 is actually going to be equal to du2, where du1 is the heat lost by the first type of gas, okay, and du2 is going to be the amount of heat gained by this second type of gas. So if we equate the heat lost and heat gained, then we can get the equation we want here. So du1, what is this du1 here? According to our formula, du is equal to n cv dt, करेक्ट है. सो यहाँ पे आ जाएगा du1 के लिए n1 इंटू cv1 इंटू dt के बदले क्या आएगा? अगर ये t1 जो है वो बड़ा है t2 से, तो उस केस में इसका टेम्परेचर तो फॉल होने वाला है, इसलिए हीट लॉस्ट बाय इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय t1 माइनस t, करेक्ट है, नो डाउट, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अभी du2 के लिए क्या होगा देखो ठीक से, du2 मतलब heat gained by this second type of gas. So how much heat is gained by it? It's obtained by n2 into cv2 into, here it will be the change in temperature. In this case it will be the rise in temperature. So rise in temperature कितना है? उसका टेम्परेचर ऑलरेडी पहले T2 था और अभी वो T बन गया. तो ऐसे हालत में उसका जो टेम्परेचर गेन है या राइज है वो T माइनस T2 के बराबर बन जाएगा. And now if we just simplify this equation further, then we can get this n1 cv1 into t1, okay, minus n1 cv1 into t only, which is equal to n2 cv2 into t minus n2 cv2 into t2. So if we take this all the terms containing t in one side and not containing t on other side, then we can just get simplified this as, तो इसको अगर इस तरफ लेके जाएंगे और इस टर्म को इस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा देखो n1 cv1 t1 प्लस n2 cv2 into t2, which is going to be equal to n1 cv1 into t plus n2 cv2 into t. And if we take this t common from this bracket, then this will be n1 cv1 plus n2 cv2 left as it is into t as it is, which is actually going to be this n1 cv1 t1 plus n2 cv2 into t2. And then here we can be able to find out the final temperature of that mixture by just dividing this whole thing here, so that we can get this n1 cv1 into t1 plus n2 cv2 into t2 divided by n1 cv1 plus n2 cv2. We can also get this equation by finding out the cv of mixture by using the formula just we have derived, n1 cv1, याद है ना, n1 cv1 plus n2 cv2 अपॉन n1 plus n2. ये फॉर्मूला जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर का है, और अगर हमको फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का चाहिए तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आराम से मिक्सचर के लिए, ठीक है. तो मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर है तो वो निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला सीवी निकाल के भी उसको कर सकते हैं आराम से आगे. जस्ट सिंपली ये देखो, इसका जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो रहेगा U1 प्लस द सेकेंड टाइप ऑफ गैस का इंटरनल एनर्जी रहेगा U2, and that must be the equal to the total amount of internal energy of the mixture of gases, that is U. So U1 here will consist of N1 CV1 into T1, correct है, plus U2 will consist of N2 CV2 into T2, right, and that is going to be actually equal to U, where U is going to be actually this N1 plus N2 into CV into T, where T is going to be the absolute temperature of that mixture here. And now if we just simplify this equation, इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये N1 plus N2 जो है वो नीचे चला जाएगा वो साइड में,
इवन ये CV जो है वो भी उस तरफ नीचे चला जाएगा. इन शॉर्ट एक्चुअली क्या है ना, इनफैक्ट यहाँ पे N1 प्लस N2 इंटू CV, ये जो टर्म दिख रहा है हमको, तो ये N1 प्लस N2 अगर हम इस तरफ भेज देंगे ना, तो उससे जो बनता है वही बनने वाला है, जिसका वैल्यू एक्चुअली ये रहने वाला है N1 CV1 प्लस N2 CV2, and that will appear here, and when it is transferred in the other side we can get this formula easily. Correct है? So in this way we can get this same formula once again by this another method. Okay, let us see. चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में. There is a relationship between the degrees of freedom and the F, that is the gamma और degrees of freedom, इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है. देखो ठीक से, if we have the d degrees of freedom for any gas, okay, d is the degree of freedom for any gas, then according to the law of equipartition of energy, what does it tells us? The total each degree of freedom is associated with half kT of energy. So because of that, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा? d टाइम्स ऑफ हाफ kT, बराबर है. ये बन गया एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी. If we multiply this by Avogadro's number, that is N0, then we get the kinetic energy of 1 mole. Actually we can call it as U here. And if we want to find okay, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, d by 2 into k into N0 क्या बनता है? R बनता है. तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लिख देंगे RT. करेक्ट है. And now this will actually be for 1 mole only. ये 1 mole के लिए हो गया. But if you want it for n moles, then we can get it as U is equal to d by 2 into nRT. ये अच्छी तरह से याद रखो. It's a very important formula here. Remember, for n moles, okay, in general. तो ये तो चलो ठीक है, हो गया. अभी इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा du by dt. करेक्ट है. So du by dt here will actually be equal to, yes, d by 2 into nr. Correct है. So here it is going to be d by 2 nr. And even if we take this n in the denominator in this side here, then we can get this as, yes, so 1 upon n into du by dt, which is going to be actually equal to d by 2 r. Correct है. So this is d by 2 into r. And now we'll see that this is nothing but the specific heat at constant volume, right? So we can call this as CV. So CV becomes actually equal to d by 2 into r. In general, for any gas, if its degree of freedom is known, that is d, and इससे भी आगे जाके CP can be found out here. So if you find out CP here, so CP is going to be CV plus R, right? But CV is already d by 2 into R and plus R, which gives d by 2 plus 1 into R. Correct है. So in the next step we can simply say here this CP is going to be this here. Okay, so CP हमको मिल गया. CP is actually going to be d by 2 plus 1 into R, right? And now if you want to find out gamma here in this case, then we can get this CP upon CV. So that CP is going to be d by 2 plus 1 into R, which you already found out. And CV is nothing but, see it here, it is going to be d by 2 R, right? So here it is going to be d by 2 into R. So that R gets cancelled from both sides. And we are left with gamma is equal to d by 2 plus 1 divided by d by 2 simply. And now if we just separate out this d by 2 for both of the terms in the numerator, then we can be able to get this as gamma is equal to, here in the first term it will be d by 2 divided by d by 2, right? Plus 1 divided by d by 2, which actually happens to be gamma is equal to, so here d by 2 just gets cancelled, and this 1 upon d by 2 means reciprocal of d by 2, which is going to be 2 by d, and hence we can get this as gamma is equal to 1 plus 2 by d, where d is the nothing but the degrees of freedom. Remember, so gamma is going to be actually 1 minus 2 by d.
that is the degrees of freedom. Yes. Okay. And if you want to find out the degrees of freedom and we know the gamma value, then we can just rearrange this equation. Just take this 2 by d in that side so as to get this as 2 by d, which is equal to 1 minus gamma, right? Sorry, plus either, sorry. So we can just transfer this 1 itself in that side so that we get ये 1 को अगर उस तरफ डाल देंगे तो हमको मिलेगा gamma minus 1, which is going to be 2 by d, right? And then d can be actually written to be equal to 2 upon gamma minus 1. So this is the formula for obtaining the degrees of freedom if we know the value of gamma. And now in some books or reference books you may have that this d replaced by f. मतलब some books के अंदर क्या होता है, नोटेशन अलग होता है सिर्फ. तो कभी कभी क्या है कि ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको f से डिनोट किया जाता है. जैसे डीसी पांडे की बुक के अंदर भी d को मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को f से डिनोट किया हुआ है. तो उसमें तुमको ये इक्वेशन इस तरह से दिखाई देगा 1 plus 2 by f, no problem. And this equation can also be obtained to be f is equal to 2 upon gamma minus 1. After all, उसको d बोलो या f बोलो, बात तो एक ही है. It's going to be the degrees of freedom, no doubt. Okay, so this is the relationship between the degrees of freedom and gamma value actually. Yes. Okay, so चलो ठीक है. I think we'll stop here. आज के लिए हमको जो करना था वो हमने अभी आज के लेक्चर में किया है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर के मतलब चैप्टर नहीं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रिलेटेड एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे. ओके.